एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। लेट अस लुक एट द टर्म्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। Definition of active voice. A verb is in the active voice when its form shows that the subject acts or does something. For example, a poet composes poetry. जिस वर्ब का सब्जेक्ट कोई काम करने वाला हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस जुमले का सब्जेक्ट अ पोएट पोएट्री कंपोज करने का काम कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। Passive voice. Verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the subject or subject receives an action. For example, poetry is composed by a poet. पैसिव वॉइस में किसी काम को किसी सब्जेक्ट की तरफ मंसूब किया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह मौजूद होता है। इस जुमले की ऑब्जेक्ट पोएट्री ने सब्जेक्ट पोएट की जगह ली है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। We must understand here a question. Which type of sentences can be changed into passive? Active and passive is made in the sentences which contain transitive verb, means verbs which have object. In the sentence, I read newspaper, read is a transitive verb which has object newspaper. In the second sentence, he wrote a good article, wrote is a transitive verb. Most action verbs are transitive. एक्टिव से पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब्स में होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जिनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रीड, राइट, ईट, ड्रिंक वगैरह वगैरह। Passive is not made in those sentences which contain intransitive verbs, means verbs which have no object. For example, walk, go, run, rise, fall, etc. are intransitive verbs which have no object. So there would be no passive for the sentences like I am walking, he goes to school, the sun rises in the east. अगर जुमले में कोई इंट्रांजिटिव वर्ब मौजूद है तो उसकी पैसिव नहीं होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे वॉक, रन, गो, राइज, फॉल। लेट अस लर्न पैसिव इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम मस्बत बयानिया जुमलों में पैसिव सीखेंगे। Look at the example of affirmative sentence in active voice. Children like games. Before changing any sentence from active voice to passive voice, we must recognize its parts. We should underline subject, verb and object in the given sentence. Affirmative sentence can be changed from active to passive in just 5 steps. एक मस्बत जुमले की पैसिव 5 स्टेप्स में की जा सकती है। स्टेप नंबर 1, पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखें। स्टेप नंबर 2, यूज टू बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऑफ द कंसर्न टेंस। जिस टेंस का जुमला है उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। दिस टेबल शोज हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस। इस टेबल में टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं। जिस टेंस का जुमला एक्टिव से पैसिव करना होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेकर सब्जेक्ट के मुताबिक हमें इस्तेमाल करना होगा। टेंस और उसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर, सिंपल पास्ट में वाज और वर, सिंपल फ्यूचर में शैल बी एंड विल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर के साथ बीइंग इस्तेमाल होगा, पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन और हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में शल या विल के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। स्टेप नंबर 3, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर 4, यूज बाय और अदर प्रेपोजिशन। बाय प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर 5, पुट सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें।
अगर किसी जुमले में कोई प्रनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की हैसियत में आता है तो इस चार्ट के मुताबिक हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। Let us change this active sentence into passive. Let us find out subject, verb and object in the given sentence. एक्टिव जुमले के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानें। In the given sentence, the word games is object. We have to put it at the place of subject. इस जुमले का ऑब्जेक्ट गेम्स है, हम उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। Given sentence is in simple present tense. There are three helping verbs in simple present: is, am and are. Games is plural, so we have to use are as helping verb here. Simple present में plural subject के लिए are इस्तेमाल होता है। The main verb in the sentence is like. We have to use its third form liked. लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड इस्तेमाल होगी। फोर्थ स्टेप इज टू पुट प्रेपोजिशन बाय। इन द फिफ्थ स्टेप वी शैल पुट द सब्जेक्ट चिल्ड्रन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आखिर में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। इस तरह 5 स्टेप्स में एक अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव मुकम्मल हो जाएगी। स्टेप 1 में हमने ऑब्जेक्ट गेम्स को सब्जेक्ट की जगह पे रखा। स्टेप 2 में हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया। स्टेप 3 में लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक को रखा। स्टेप 4 में बाय प्रीपोजिशन इस्तेमाल की। स्टेप 5 में चिल्ड्रन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा। इस तरह 5 स्टेप्स में पैसिव मुकम्मल हो गई। Look at the other example. He encouraged me. दूसरी मिसाल में देखें, he encouraged me इस जुमले में he सब्जेक्ट है, encouraged वर्ब है और me ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। In the first step, we shall put the object at the place of subject. मी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और चार्ट में देखें कि मी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। इन द सेकंड स्टेप वी शैल पुट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द कंसर्न टेंस। दूसरी स्टेप में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दिया गया जुमला पास्ट टेंस का है और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं, आई के साथ वाज इस्तेमाल होगा। थर्ड स्टेप इज़ टू चेंज द वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। थर्ड स्टेप में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इनकरेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। यूज बाय इन द फोर्थ स्टेप। चौथी स्टेप में बाय इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 5 पुट द सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। पांचवी स्टेप में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें। ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा। इस तरह 5 स्टेप्स में एक अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव मुकम्मल हो जाती है। इन द टॉपिक ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, for the passive in affirmative sentences, let us see more examples. You can see here sentences from different tenses changed from active voice to passive voice. अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ टेंसेस के जुमले एक्टिव से पैसिव किए जाते हैं। Sentence number 1 is from simple present. Mrs. Maldon kills Professor Henry Corey. In passive voice, Professor Henry Corey is killed by Mrs. Maldon. Second one from simple past, Shakespeare wrote Hamlet. Hamlet was written by Shakespeare. Third one from simple future, the manager will sign the contract tomorrow. The contract will be signed by the manager tomorrow. Fourth one from present continuous, a clerk is typing your letter.
Your letter is being typed by a clerk. Sentence 5 from past continuous. The country was making progress. Progress was being made by the country. Sentence number 6 from present perfect. A chef has prepared this food. This food has been prepared by a chef. Number 7 from past perfect. Columbus had discovered America. America had been discovered by Columbus. Number 8 from future perfect tense. The professor will have delivered the lecture. The lecture will have been delivered by the professor.